So as you've seen, this is like MediaPipe hand modules. तो यहाँ पे हमारे 21 पॉइंट्स हैं. ओके अब हमें जो चाहिए वो चाहिए हमारी इंडेक्स फिंगर्स. ओके इंडेक्स फिंगर्स के पॉइंट्स चाहिए सिर्फ, और सारे फिंगर्स के पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए. तो हमें सिर्फ हमारी इंडेक्स फिंगर दिखेगी तो ही हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट और राइट मूव करेगा. ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो 8 है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा लाइक इंडेक्स की फिंगर टिप को बता रहा है. ठीक है, एक ये हमारा 6 पॉइंट है. वेट, ये हमारा है ये वाला पॉइंट, ये हमारे फिंगर्स की टिप पॉइंट को दिखाता था. यहाँ पे भी देख सकते हो. और यहाँ पर जैसे हमारी फिंगर्स टिप है या हमें ये पिप है, और ये वाली जो इंडेक्स फिंगर एमसीपी. अब हमें जो इंडेक्स फिंगर दिखानी है, हमें कोई भी 3 पॉइंट्स चाहिए. तो एक तो होगी हमारी ये जिससे हमारी फुल फिंगर्स का पता चलेगा इस वाली में, और एक हो गई हमारी ये सिर्फ 3 एंगल्स बनाएंगे लाइक ए से बी और बी से सी. इस तरीके से हमारे पास 3 एंगल्स होंगे. और ऐसे ही हमारा जो सेकंड जो हम क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, कि हमारा इंडेक्स फिंगर और जो हमारा लाइक थंब है वो क्लिक हो जाएगा. तो आप देख सकते हो हमारी एक तो लाइक इंडेक्स फिंगर का जो टिप है प्लस ये जो हमारी थंब का जो टिप है, ये दोनों जब हमारे टच होंगे आपस में तब जाके जो है हमारा क्लिक होगा. उस टाइम हमारी जो वेस्ट होगी ये वाली, ये भी हमारी 0 रहेगी. तो हम इसका एंगल देखेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो ए से बी और बी से सी, ये 3 पॉइंट्स के बीच का बनेगा फॉर क्लिकिंग के लिए, जो हम थम्स और इंडेक्स फिंगर को क्लिक करने के लिए यूज करेंगे. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम उस एंगल और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक फाइल बना लिया utility.py. तो सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट करेंगे numpy. पाइथन में जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं उसके लिए हम numpy को ही लेते हैं. ओके इंपोर्ट numpy एज numpy. ओके अब यहाँ पे हमें एंगल्स फंक्शंस बनाने हैं फॉर गेटिंग द एंगल एंड फॉर गेटिंग द डिस्टेंस. तो फॉर गेट एंगल we are taking 3 points like A, B, C, which I already told you, like B is our middle point, and like A and B are our like tip point, and C is like my last point. Okay, so first of all we are using one like radians for getting the angles, and B dot arcitron, which gives the angles okay between the C1 minus B1 y-axis, and for C1 0 or minus B0. Okay, and we are just minus and B done again, then A1 minus B1 comma A0 for x-axis angle 0. Okay, now I explain you what I'm doing here. See, for example, this is my like index finger. Okay, and this is my thumb. Okay, and this is my like y points, like little bit it is not going straight, but for your understanding it is y-axis. Okay, y-axis, and this is my x-axis. Okay, this is my this A and like this B points. For example, so we just want to calculate the angle between this points. Okay, for A to C, and majorly we are doing the minus here for getting this part. Okay, for like I'm making it a different color. For making this part we are actually just minus it and calculating this point between like y-axis and x-axis. So this my like C1 and B1 are like y, we are just denoted by y, and it is like 0, which is like x. So it is the angle between my C to B, B to C, and this is the angles between my A to B and like A to B. Okay, as I already told you in my index finger also there are 3 points, like A is equals to 8 and B is equals to 6 I guess, or C is equals to 5. So the angle between that A, B and C, these 3 points we are getting by this angle. Okay, by this function. So now this is coming into our radian, so we have to convert into the degree. Okay, so we are using this another like angle NPS dot ABS. We are making it by a positive integer, that's why we are taking ABS and convert it into the degree. This radian, convert the radians into the degree. Okay, like this. So we get a clean angle in the degree and clean angle in the degree, right? Or like written the angle.
So now we create our another function, which is like our for distance. Get distance landmarks list. Landmark list. ओके तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए जो हमारा एक्स और वाई है, इसलिए हम इसमें ये चीज़ पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि इफ लाइक लेंथ जो हमारी लैंडमार्क है लिस्ट में वो लाइक नॉट बी लैंडमार्क नॉट लैंडमार्क लिस्ट इज ग्रेटर देन 2, मतलब हमारा 2 सबसे बड़ा होना चाहिए उसमें. ओके like 2b. Okay, then we have got our 2 points like x1 that y1 which we already get from x1 and y1. Okay, comma x2 y2 equals to landmark 0 comma landmark 1. Okay, so coordinate of the first point by we get by this points, and coordinate of second point we get by this. Okay, so as you know, whenever we calculate any Python function, whenever we calculate any distance, so we are using a Pythagoras theorem. So for this also we are using the Pythagoras theorem. So for this there is inbuilt function which is called hypot. Okay, we are just calculating our like distance s2 minus x1, like normally our like formula for finding the Pythagoras y2 minus y1. Okay, whereby we which get our 2 points. Okay, and they are just written and we interrupt. Like if the numbers is coming in very like very low decimal value, for example, it is coming in 0.3, 0.4. So in that case, we just want to scale it up and give it to the range between like 0 to 1 or 0 to 1000. That's why we are using this. Okay, and this is right, our 2 function is written. Okay, one more thing here, we have to return it. We are not return it, so we have to return it, or this is like oh everything out of. Okay, like that. So this is our angle function and this is our distance function. Okay,